Good evening, friends. Today I have a special guest with me who came all the way from Atlanta, USA. He's 15-year-old. His name is Yajjat Sinha, and he just passed his class 9th exam, and right now he's in class 10. And he's visiting his family in India. And today we are going to get introduced to what actually Yajjat Sinha is. So my first question to Yajjat is, tell me something about yourself. Originally, I'm from the US, but nationality, I'm from India also. So when I really love being in India, being with my family, being with my cousins, as it introduces more bond that will carry throughout our lives. Recently, as he said, I passed my class 9th exam, which was not that bad. A fun fact about me is that I really love to eat, and I live to eat a lot. So what you like actually? What are your top 5 cuisines which you like, or the items you like? Because I can see it says Tuesday forecast change of tacos, right? So you like tacos? Yeah, I really like tacos. Tacos are really flavorful. They have beans, and they don't have beef, which I don't like it. I can't eat, but I like tacos. He said 5, so I also like pizza. I like to eat burgers, all the normal junk food that we teenagers like to eat. I also like Indian cuisine, like naan paneer, which is really delicious, really flavorful. Sometimes when I'm in India and I order naan paneer, it's way too spicy for me because I can't handle the spiciness over here. But in America, it's not even that spicy. Like naan paneer's really fine. I also like to eat chole bhature, which is like chickpeas and some naan bread, as they say in America. And it's really spicy here, as I said, not really that spicy there, but it's really flavorful here. I really love the food here and how it's different from where I come from. So I would like to understand from you, what actually is your routine during the day? At what time you wake up and ready for the school, then go to the school, what do you study there? And when you compare it with, what your cousins are doing in India, what's your overall experience? Begin my schedule, my routine there. So I wake up around 7 and I get ready by 7:25. My bus comes at 7:30 and I go to school and I reach there by 8:20. So 8:20 is when our first bell rings, and we have 7 periods throughout the day. In 9th grade, I started out with government, which is a social studies class there. Then I went on to a music class, which is orchestra, which I like to play. And then we had a homeroom period. After that, I went to math, geometry, and then I went into ELA, which was by far ELA's English, which is by far my favorite subject this year. Then I had French, which we were required to choose a foreign language, so I chose French. And then I also, after that, it was biology, a science. And then I come home at around 4 p.m. So when I compare it with like how the education system there is versus here, I see like here it's a lot of quizzes like every day. Like just recently, my brother here, he's had to do like 6 quizzes in 6 days, which is a lot. And I couldn't remember the last time I had 6 quizzes in 6 days. And it was like the first day of school, he had a quiz and then another quiz. And when I was looking through his question paper, it was not that easy from there. There's more lenient. They have more project-based assignments, like more of your understanding than pure memorization. And they teach it to us before we take the quiz on it. So basically, I would say the education system here is harder than the US, because the US it's really easy there. Like the quiz isn't that. There's a reason why if Indians and Chinese people go there, they succeed a lot. It's because they have the smarts to actually succeed there. However, here there's a lot of competition. There's a lot of quizzes. There's a lot of tests. A lot of assignment, a lot of workload compared to the US, and I bet there's a lot more homework. I haven't seen my brother's homework right now, but that's what I think right now. You must be having many kids from other nationalities, right? So what is that difference in your upbringing, or the way your mother or father, your family treats education
And how do you differentiate it between the local there, like the white people or the colored people there, and what actually is the importance which is given to the education in your family? We would like to understand that. Coming from a traditional Asian family there, most of the Asians there prioritize education over like sports, as compared to the African Americans or the whites that prefer sports over academics. So for me, education hasn't been that hard. Like I just read something, it's just in my brain. So I never really studied for any of the tests. Like I've never studied for a test until like the finals week of ninth grade. And really, like there's a lot of cultures, there's mixed, like there's a lot mixed cultures there, which I think like changes in society compared to like India, where there's a lot of community bonding, while there it's more like you're on your own, really. And going on about education over there, I think I prioritize education over like sports, but I would like to get into sports more as to balance out my extracurriculars. What I spoke to Yajat before the show, and I realized that he's also learning Hindi, and he can speak really good Hindi with some Bihari accent, and also he can read Hindi. A few years ago, I went through 7 years of Hindi school where I learned to write, read, and speak fluently in Hindi. We had tests at the final, and then we passed based on our grade. So most of the Indians there that I know that are my friends don't know how to speak Hindi. Like they can't speak Hindi. Their parents know, but they didn't make the effort to make their kids learn. So for me, I want to speak Hindi because I want to be able to speak when I come here. And like in India, I don't want to keep saying English while all my family says Hindi. So usually when I'm in India, I speak Hindi and I write Hindi and all that. So I don't really speak that much English as compared to my other siblings that speak a bit too much English here. So I would like to connect with my family over here in terms of language and not just be astray, because I don't want to be like away from my culture. मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ. मेरा नाम यजत है. मैं अटलांटा में रहता हूँ और मैं हिंदी 7 साल से पढ़ता था. और मेरे परिवार हम लोग सब घर में हिंदी में बात करते हैं. और मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है क्योंकि एक दूसरा ग्रामर है, दूसरा लैंग्वेज है, दूसरा राइटिंग सिस्टम है जो इंग्लिश और फ्रेंच से डिफरेंट है. जैसे इंग्लिश और फ्रेंच ना ABCD, यहाँ हिंदी में क ख ग घ होता है. तो नया है, मेरा ब्रेन को शार्प करता है और मैं यहाँ हिंदी से मैं बात कर सकता हूँ. सो अब हम हिंदी में बात करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कितने दिन हो गए इंडिया आए हुए? मुझे अभी तक 19 दिन हो गए इंडिया में रहते हुए. अभी हम लोग का 10 दिन बाकी है यहाँ रांची में रहने में. And what are the 3 things you like about India? India, there's a lot of बहुत सारा लोग है यहाँ, बहुत सारा लोग खेलते हैं, बाहर जाकर लोग खेलते हैं. यहाँ बहुत कम्युनिटी बॉन्डिंग होता है और यहाँ बहुत फ्रीडम है बच्चा लोग के साथ. जैसे बच्चा लोग यहाँ, हम लोग का यहाँ एक सुपरमार्केट है कशिश, और वहाँ हम लोग जा सकते हैं अकेले, वहाँ खरीद सकते हैं. वहाँ US में तो वो नहीं होता है. और एक और चीज़ है यहाँ, लाइक यहाँ मेरा सब परिवार है, वहाँ तो कोई नहीं है. There's सुल्तान, no one. So you mentioned community, freedom and family. Very nice. इसके अलावा 3 चीजें जो आपको इंडिया के बारे में थोड़ी कम पसंद है. थोड़ा कम पसंद है यहाँ बहुत लाइक अपना सिक्योर रखना पड़ता है सामान. जैसे अब मैंने आज टोपी खोया था और मुझे लगा कि आज टोपी चुरा गया, तो थोड़ा अपना यही टोपी जो आपने पहनी है? हाँ, जो यही टोपी है, तो वापस आपको मिल गई, राइट? आपको मिल गया था वो, थैंकफुली कोई चुराया नहीं. और यहाँ ना थोड़ा एथिक्स का थोड़ा कम है. जैसे लाइक बाहर से लाइक अपना गाड़ी से, जैसे हम लोग का बालकनी में ऊपर से लोग पानी फेंक रहा है नीचे और वहाँ हम लोग कपड़ा पसार रहे हैं. मतलब अपना सिंक के नीचे डाल दो, हमको अच्छा नहीं लगता है. सही एथिक्स में जाता है कि अपना घर क्लीन करो, अपना गाड़ी क्लीन करो, और बाहर डजेंट मैटर. हम लोग ना एक हिंदी स्कूल में हम लोग का एक प्ले होता था जिसमें हम लोग एक प्ले किए थे, सच कुछ था क्लीन इंडिया का, जिसमें था कि इंडिया को क्लीन रखे
उसमें हम लोग का चालू का सीन हुआ था कि एक गाड़ी से हम लोग गए और गाड़ी से कोई फेंक, वही वही यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूव अगर हो गया। जैसे एक मेरा भाई है, नाम है वियान, वो ना उसके पास एक आइसक्रीम का रैपर था और वो बोला कि हम अपना घर जाकर फेंकेंगे। वो अगर सब में आ जाएगा ना, ये देश पूरा अच्छा हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फेज है उसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि मैं पूछूंगा यजत से कि वो भारत को कितना जानता है, और वो क्लास 10 लेवल का ही होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आसान रहे आपके लिए। तो यजत, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का भी नाम है नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का द्रौपदी मुर्मू। भारत में कितने राज्य हैं? 28 यूनियन स्टेट्स। तो अब आप बताइए कि जिस राज्य में आप रहते हैं वो राज्य किस ईयर में बना था? ओह नो, मुझे ये पता है कि ये बिहार से निकला है झारखंड, मगर मुझे ये ईयर नहीं पता है। मुझे लग रहा है 1980s 90s में हुआ होगा। एक सेकंड 2000। लगता है कहीं से आपको हिंट मिल गई है। हिंट नहीं मिला है। आपने एथिक्स की बात की, तो आपके एथिक्स स्ट्रांग है? टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, यस। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको मौका मिले कि 5 चीजें भारत में चेंज करनी है, तो आप वो क्या चेंज करना चाहेंगे? मतलब जो हम कर सकते हैं या जो गवर्नमेंट कर सकता है? जो लाइक सजेशंस यू वांट टू गिव टू द गवर्नमेंट। यहाँ का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टेड ऑफ जो बना फिर 20 साल टूट गया फिर बना, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा और टेक्नोलॉजी सिटी जैसे अभी बन रहा है गुजरात में गिफ्ट सिटी, जो एक टेक्नोलॉजी का सिटी, वैसा और सिटीज़ बनाए तो, और ग्रीन सिटीज़ वो बनाए, वो अच्छा होगा। और थोड़ा ना क्लीन इंडिया को और बढ़ाए कि हम लोग का देश थोड़ा अच्छा। एजुकेशन सिस्टम में आप अगर कुछ इनपुट्स देना चाहें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं यूएस में, और इंडिया में अगर आपको पूछा जाए कि यूएस में क्या अच्छा है जिसको इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो 2 या 3 चीज़ें क्या होंगी? यूएस में एक प्रोग्राम रहता है एडवांस प्लेसमेंट, जो हम लोग को कॉलेज कोर्सेज हाई स्कूल में सिखाता है। यहाँ भी हम सुने हुए प्रोग्राम्स में अगर थोड़ा वाइडली अवेलेबल होगा तो अच्छा होगा। जैसे लाइक जो लोग टैलेंटली गिफ्टेड है वो और आगे हो सकता है सब क्लासेस में, यहाँ भी इन और फ्रीक्वेंटली कर दो। तो दोस्तों, आज आप मिले यजत से। यजत बहुत ही प्रभावी छात्र हैं अपनी क्लास में। मुझे पता है कि ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? मैं वियोला बजाता हूँ। वियोला के बारे में थोड़ा बताइए। वियोला एक इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन जैसा है और थोड़ा भारी है उससे, और थोड़ा डीपर साउंडिंग है, बस वही दोनों सिमिलर। और एक अच्छा गाना भी गाते हैं ये। तो मैं चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट हम अंत करें एक सुरीली आवाज से। तो ओवर टू यू यजत फॉर द कंक्लूडिंग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूँ, मुझे गाना क्यों नहीं आता? कोई गाना नहीं पता है, मैं कोई गाना सुनता ही नहीं हूँ। कंक्लूड कर दीजिए। तो आपने देखा कैसे भारत के बच्चों की तरह ही यूएस के बच्चे भी शर्माते हैं गाना गाने से। और विश यू ऑल द बेस्ट यजत। इट वाज a great learning experience talking to a young kid. You're 15 year old, right? Like you, and बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम है कपिल जैन। जय हिंद।